Hello everyone, Namaste Pranam Johar. Welcome to my YouTube channel Saloni Law and Life Diaries. In this video, I am going to discuss about the reservation system in India, जिसे हम भारत में आरक्षण प्रणाली भी कहते हैं. In this video, I am going to discuss the reservation with some constitutional provision, with some leading cases and data provided by appropriate government authority. आज के वीडियो का कंटेंट होगा Introduction, Constitutional Provisions, Leading Cases on Reservation, Data on Reservation in India, Impact of Reservation, and with last some conclusion. So let's start the reservation system in India with me, Saloni. इंट्रोडक्शन को हम बहुत इजी वर्ड्स में देखें तो इन इंडिया इट इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बैक्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. And in simple terms, it is about facilitating access to seat in the government job, education institution, and even legislature to certain section of the population. If we come in the word reservation, the reservation comes from the word to reserve or to fix the things for weaker section of the society. In our Indian constitution, the reservation is based on to establish the equality in our society. The age-old caste system of India is responsible for the origination of the reservation system in the country, and these sections have faced historical injustice due to their caste identity. As a quota-based affirmative action, the reservation can also be seen as a positive discrimination. The scholar Michael Walzer said, if you want to give equality, you can't give in a same sphere like education, job, and legislation. Or we can say, you can't put the same formula for same sphere. Historical background of reservation system in India. After independence, initially reservation was provided only for SC and STs, scheduled caste and scheduled tribe. OBCs were included in the ambit of reservation in 1991 on the recommendation of Mandal Commission. The scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, ये लोग विकर सेक्शन से आते हैं जो काफी लंबे समय से सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे. So for providing the equal opportunity to them, there is a concept of reservation is introduced in our Indian Constitution. The reservation is the way of establishing equality in our society, and it is a policy which delivers the equality as a value and justice as a value. After the Mandal Commission, OBC were included. In Mandal Commission, in exercise of the power conferred by Article 340 of the Constitution, the President appointed a backward class commission in December 1978 under the chairmanship of V.P. Mandal. The commission was formed to determine the criteria for defining India's socially and educationally backward classes and to recommend steps to be taken for the advancements of those classes. The Mandal Commission concluded that India's population consisted of approx 52% OBCs and therefore 27% government jobs should be reserved for them. The Commission has developed 11 indicators of social, educational, and economic backwardness. Apart from identifying backward classes among Hindus, the Commission has also identified backward classes among non-Hindus, Muslims, Sikh, Christian, and Buddhist. इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि the concept of equality, if you see the left side image, and the concept of equity in right side image. इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना सारे को, जो हमारे आर्टिकल 14 में भी डिफाइन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ. Reservation is the policy for establishing the equality in our society.
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन। अभी तक हमने देखा कि रिजर्वेशन एससी एंड एसटी एंड ओबीसी जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के उनको प्रोवाइड किया जाता है फॉर एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, जिसके प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। पार्ट थर्ड जहाँ पे रिजर्व सीट्स प्रोवाइड किए गए हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एंड गवर्नमेंट जॉब में, where Article 15 deal with the reservation in a education institution and Article 16 deal with the reservation in government jobs. Part 4, which deals with the directive principle of state policy, in Article 46, promotion of educational and economic interest, duty of a state to promote educational and economic interest of weaker section. Part 16 mainly deal करता है reservation in legislation, where central and state legislature has some reserved seat for SC and STs. Article 243D provides reservation of seats for SCs and STs in every panchayat. Article 233T provides reservation of seats for SCs and STs in every municipality. And Schedules 5 and 6 also has the provision as to administration and control of STs. अब कुछ लीडिंग केसेस को देखते हैं रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। जो पहला केस है वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराइजन 1951 and this case was the first major verdict of Supreme Court on the issue of reservation. इस केस का आउटकम था कि द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट व्हाइल आर्टिकल 16(4) प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 15 लैक्ड सच अ प्रोविजन एंड इसके consequences थे कि led to the first amendment of the constitution and inserting clause 4 into article 15 and allowing the state to make a special provision for the advancement of socially and educationally backward classes. आर्टिकल 16 डील करता है रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स में एंड आर्टिकल 15 डील करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट केस इज इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992. द कोर्ट एग्जामाइंड द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16(4). ये केस काफी इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन के लिए क्योंकि इसमें मेन हमारा बहुत सारे फैक्टर्स को ऐड किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया। तो फर्स्ट था कि एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट। इफ द ओबीसी हैज द क्रीमी लेयर are in the creamy layer, they can't get the reservation benefit and promotion में reservation allow नहीं होगा। A total reservation quota should not exceed 50%। ये काफी important था जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन में नहीं दे सकते हो। In this case consequences, Parliament enacted the 77 Constitutional Amendment Act and introducing Article 16(4)(a) and following reservation in promotion for SCs and STs if they are not adequately represented in the public employment. अगला केस है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इस केस का मेजर इशू था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 16(4)(a). इस केस का आउटकम था the Supreme Court upheld the validity of Article 16(4)(a) with some conditions, where SC and ST communities must be socially and educationally backward, they must not be adequately represented in public employment, and the reservation policy must not affect overall administrative efficiency. Next case, in Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan Gupta case of 2018, the Supreme Court holds that reservation in promotion does not require the state to collect quantifiable data on the backwardness of the scheduled caste and scheduled tribe. The major issue of this case is reservation in promotion and the creamy layer concept, and the outcome of this case is reservation in promotion does not require the state to collect quantifiable data
on the backwardness of the SC and STs. The creamy layer exclusion extend to SC and ST and preventing reservation in promotion for those who is in. अब हम देखते हैं डेटा ऑन रिजर्वेशन इन इंडिया. गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट जॉब्स, लेजिस्लेशन और इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कितने सीट को रिजर्व किया गया है उस डेटा को अब देखेंगे. तो रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स में जो है वो एससीज शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, एसटीज के लिए 7.5 एंड ओबीसीज के लिए 27% एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10% एंड करेंट रिप्रेजेंटेशन ट्रेंड्स अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर. रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देखें तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सीट्स रिजर्व है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म, बट सेंट्रल एंड यूनिवर्सिटीज में एससीज के लिए 50% है, एसटीज के लिए 7.5 है, ओबीसीज के लिए 27 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10%. रिजर्वेशन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में विमेन के लिए 33% है and ST/SCs के लिए proportional to their population statistics showing the impact on local governments. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है और जो विमेन बेस्ड PWD कैटेगरी बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल बेस्ड रिजर्वेशन होता है. कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो ओवरऑल रिजर्वेशन में तो 15%, 7.5%, 27, 10 ऐसा है जो 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो जिसे हमने देखा था इंदिरा सोने के केस में. और जो रिजर्वेशन मिलता है विमेन के रिगार्डिंग वो ओवरऑल रिजर्वेशन है जिसमें आपको जो 15% का 30% है ना उसमें भी आपको विमेन के लिए रिजर्वेशन मिलेगा. अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिजर्वेशन. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि empowerment of marginalized community and through enhance the educational and employment opportunities and increase the diversity and representation in public institution. Criticism and challenges भी हम देखेंगे कि debates around the meritocracy versus reservation. Issues like the exclusion of the creamy layer, over-representation in some sectors, and the need of socio-economic reform. At last हम देखेंगे conclusion. Reservation is fair as far as it provide appropriate positive discrimination for the benefit and the downtrodden and economically backward section of the society. But when it tend to harm the society and ensure privileges to come some at the cost of other for narrow political aim, it should be done away with as soon as possible. The reservation system remains crucial for social justice but required periodic review to ensure its effectiveness. The reservation is the way of establishing equality in our society, and it is a policy which deliver the equality as a value, justice as a value. The reservation introduced in our constitution for establishing the equality. But nowadays, the mechanism of reservation in India introduce the reverse discrimination in our society. गवर्नमेंट को इसके लिए एप्रोप्रिएट लॉ बनाना चाहिए क्योंकि टाइम टू टाइम रिजर्वेशन लॉ चेंज होते आए हैं और प्रेजेंट सिचुएशन में भी चेंजेस की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है क्योंकि बहुत सारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है. तो होप आगे गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी लाई जाए जिसमें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमारा बना रहे जैसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ आर्टिकल 14 में, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. थैंक यू अभी तक मेरे वीडियो में साथ में बने रहने के लिए. प्लीज गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सलूनी लॉ एंड लाइफ डायरीज.